Hi Yash, Halchal. Ankit, all good. What did you think about Wimbledon 2025? I think it's getting exciting between Sinner and Carlos Alcaraz. I think एक नेक्स्ट जनरेशन की राइवलरी स्टार्ट हो रही है जो अगले 15-20 साल तक चलेगी। हमने देखा कि देयर वाज अ ट्राइब ऑफ नडाल, जोकोविच एंड फेडरर। उसके पहले सैम्प्रास एंड आंद्रे अगासी आई थिंक, बट आई थिंक 23 22 दे आर यंग गन्स नाउ एंड लाइक दे आर सेटिंग टेनिस ऑन फायर। और हम ऑलरेडी हम लाइक पूरे ग्लोबल स्पोर्ट्स का टेंशन देखा जाए और इंडिया का खासतौर पे इस समय लंदन में था, लॉस्ट मैच चल रहा था, वहां पे सारे सेलिब्रिटीज भी गए, तो विंबलडन वाज गेटिंग वेरी फेमस इन इंडिया में भी जस्ट बिकॉज ऑफ द सेलिब्रिटी प्रेजेंस। Yeah, बट अगेन लाइक कमिंग बैक टू टेनिस, इट वाज आई मीन आई मिस्ड फेडरल एंड नडाल, लाइक कितने सालों से उनको फॉलो कर रहे थे। सिर्फ जोकोविच अकेले, लाइक ही इज रिमेनिंग आउट ऑफ थ्री। बट सिनर, आई थिंक ही इज आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक फ्रॉम लास्ट ग्रैंड स्लैम, आई थिंक ही केम बैक and won this one. Like, what do you think about Yannick Sinner? yeah. First of all, like you said, I think 2002 से 2024 पहला साल ऐसा था जब फेडरर, नडाल, जोकोविच and Andy Murray. Without these guys, we had a final. So it's like you said, we are entering in a new era. जहाँ पे Carlos Alcaraz and Yannick Sinner are here to dominate. Yeah. And let's talk about the Wimbledon champion, Yannick Sinner. आप एक महीने पहले वो फ्रेंच ओपन हारे। फ्रेंच ओपन 3 चैंपियनशिप पॉइंट है उनके पास हाँ। अल्करस की सर्व पे, एंड ही लॉस्ट द गेम सेट एंड द मैच। वहां से बहुत लोगों ने उस टाइम बात की कि यार दिस इज द ग्रेटेस्ट कमबैक इन द स्पोर्ट्स हिस्ट्री फॉर अल्कराज एंड हुएवर, राइट? ऑफ कोर्स यानिक, आप यानिक के बारे में सोचिए, व्हाट अ हार्ट ब्रेक ही हैड जब अल्करेज अपनी टीम्स के साथ ही वाज हगिंग देम, ही वाज सेलिब्रेटिंग आफ्टर हिम, एंड यानिक सिनर बैठा हुआ था विद हिज टॉवेल, विद हिज डेडली स्टेयर एट अल्करेज। उस वक्त सारे थॉट्स आ रहे थे उसे कि यार मैं कहाँ से हारा हूँ। सब एक एथलीट के दिमाग में, वी डोंट नो, राइट? बट आई एम श्योर विद दैट काइंड ऑफ एलीट एथलीट, वो मोमेंट एब्जॉर्ब करना, he was locked in. He was just I mean, उसको पता था कि ऐसा एक टाइम आएगा। उस स्टेयर से मालूम पड़ा था कि एक टाइम आएगा कि वो जीतेगा, वो कार्लोस को ग्रैंड स्लैम फाइनल में हराएगा। हेड टू हेड हराए हुए हैं, बट अब इस Mm-hmm. मैच से पहले he was Carlos had a perfect game against Sinner. तो आई थिंक जो उनने किया है, जहां से सिनर आए हैं फ्रेंच ओपन के बाद यहाँ पे, just amazing. I mean, I'm just impressed with the way he has come back and played. या मैं उस जब मैं लास्ट हम फ्रेंच ओपन की बात कर रहे थे तब देखा मैं, लाइक पीपल आर कमेंटिंग कि ही वाज शॉक्ड, मतलब हाउ हाउ वाज ही लुकिंग एट अल्कराज, मतलब कि बट अगेन लाइक वो एक आई थिंक वो ही वाज इमेजिनिंग कि नेक्स्ट टाइम जब मैं हराऊंगा तो मैं क्या करूंगा, लाइक हाउ वुड आई बिहेव, मतलब ही वाज काइंड ऑफ गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। Visualization. Visualization, मतलब he was not disappointed, he was just looking at it कि this is how victory is like, and like next time जब मैं हराऊंगा तो ये वो बंदा है। So he was already preparing for Wimbledon. I think he prepared for it like एक महीने पहले से। तो Yeah. I think amazing, like I mean हमें थोड़ा टाइम लगेगा सेम फैन फॉलोइंग बनाने में, बिकॉज हम इतने सालों से इन तीन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। आई जस्ट होप दैट कि सिनर और अल्कराज की राइवलरी भी इतनी ही फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल हो जितनी नडाल और फेडरर और जोकोविच की थी। एंडी मरे वाज देयर इन फेब फोर, मुझे ऐसा लगता है कि टेनिस का अगर फेब फोर बोले तो, बट लेकिन ही वाज नॉट द काइंड ऑफ विनर, लाइक ही वाज ऑलवेज चैलेंजिंग ऑन द आउटसाइड, बट आई थिंक इट वाज द बिग थ्री हु डोमिनेटेड टेनिस, राइट? 20 22 24, लाइक 66 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स तीन लोगों के बीच में। और That is इन दो लोगों के बीच में ऑलरेडी मेरे ख्याल से 9 हो चुके हैं एट 23 22 ईयर्स ऑफ एज, मतलब तो ये और आगे जाने वाले हैं। yes. लाइक आई डोंट नो लाइक और कौन तीसरा चौथा कौन आता है, बट इन लोगों की बात हम अगले 10 15 साल तक टेनिस में करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों, दे गोना टेक द लेगेसी फॉरवर्ड फॉर श्योर। एंड
एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। जब सिनर व्हेन सिनर हैड दैट डेडली स्टेयर, जब हर स्पोर्ट एथलीट के करियर में ऐसा आता है कि यार सामने वाले को कमबैक, ग्रेटेस्ट कमबैक मिला है, Yeah. हार्ट ब्रेक टाइप होता है, वो उसके साथ हो गया था। बट लाइक फेडरर डिड, he also overcame that. Nadal Yeah. overcame that, and Djokovic. So did Sinner. He came back, beat Alcaraz in a Grand Slam final, and then very well deserved. I mean, first set हारे हो, but क्या comeback किया है? I mean, I'm just in awe of the way he plays, the way he beat Djokovic in semi-final, and I'm just looking forward to these two players in the next 10-15 years. I agree. I think legends are made like that. When you come back from behind, that's how legends are made. Like you can be a great player. Like there are so many players who won different Grand Slams, right? People remember कि जब आप पीछे से आके 3 पॉइंट से आप पीछे हो, 3 सेट से पीछे हो, लाइक 2 सेट से पीछे हो, और आप आके कम बैक करके जीत रहे हो, दैट्स व्हाट पीपल रिमेंबर। मतलब तो मुझे लगता है कि दिस इज द मोमेंट दैट केम अर्ली फॉर सिनर, एंड दैट Yes. दैट बोड्स वेल फॉर हिज फ्यूचर। मुझे लगता है कि वी विल सी। आई थिंक हमने अभी ये नहीं देखा है कि कौन किस टाइप के कोर्ट में डोमिनेट कर रहा है। लाइक देयर वाज अ क्लियर विनर विंबलडन में फेडरर, फ्रेंच ओपन में नडाल, एंड जोकोविच वाज एवरीवेयर, राइट? तो मुझे लगता है कि अभी तक अल्कराज वाज लीडिंग इन विंबलडन, दिस इज फर्स्ट विंबलडन टाइटल फॉर हिम। होपफुली लाइक सिनर हैज अ चांस फॉर करियर ग्रैंड स्लैम नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो विल सी। आई थिंक एक्साइटिंग टाइम फॉर टेनिस, बट Yeah, yeah. he's not talking about future. We have to talk about the great man who is still playing at 38. A very hardworking, honest, talks from his heart, no kind of pretensions, no show off. He's as real as you get, right? What about Novak Djokovic? I mean, क्या बोलूं यार, ये बंदा जब आया था तब भी अकेला आया था। सब फेडरर की बातें करते थे। बीच में जब नडाल बहुत बड़े हुए, बहुत ग्रैंड स्लैम जीते थे, तब सब नडाल की बात करते थे। जोकोविच का कभी ऐसे कोई फैंडम नहीं रहा। यस, अभी है, बट अभी भी वो अकेला है। अभी भी सब likes of these youngsters like Yannick Sinner and Carlos Alcaraz. तो his journey has been really special. जहां से आए हैं, उसके पास 11, 21, 22, 23, मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम्स ही हैज। ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, कोई माने या नहीं माने। ही हैज बीन द वॉरियर। सो लाइक हर जगह से, फिटनेस से लेके कोई सी भी आप आ सकते हैं, हार्ड वर्क मेंटालिटी, एवरीवेयर ही हैज जस्ट बीन अमेजिंग। Yeah. उसको कितनी कितनी बार बू किया गया है, उसने वो ओवरकम किया, राइट? आप देखो, नडाल को नहीं किया गया है, फेडरर को नहीं किया गया है, ये सिनर को नहीं किया गया, एंड अल्कराज। आई नो दीज टू आर न्यू, बट इफ यू टॉक अबाउट द बिग थ्री, ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है, एंड पीपल नीड टू अप्रिशिएट हिम, एंड लाइक they need to realize he is the greatest of all time. Yeah. I'm a big Federer fan, but man, Djokovic, he's a different animal. I think PR जो होती है ना, that creates the story, right? Like there's a following for Nadal, there's a following for Federer, but Djokovic was just playing tennis. मतलब he was around 14, 15 Grand Slam titles, but as soon as like Nadal and Federer like they were kind of waning off, he just came back and won like 8, 9 Grand Slams right away. मतलब पता ही नहीं चला कि कब जीतता गया, like 4, 4, 5, 5. And he's the only person who Federer is behind. Like out of like 50 matches they played, like Djokovic won 27, Federer 23, right? Yes. So I think he became champion by beating two champions, right? Like Nadal, Federer were the great of their time, but again, like it's again like stats wise, people will say he's the greatest, but the feeling is not there for Djokovic, which is like very unfair to him. He should be celebrated like other tennis stars, and he's very honest. I think जो उसकी कोविड के टाइम पे कंट्रोवर्सी हुई थी वैक्सीनेशन को Yes. लेके, खेलने नहीं दिया गया, द वे ही टॉक्स, लाइक देयर इज ऑलवेज अ क्लाउड ओवर हिज बिहेवियर, मतलब अपार्ट फ्रॉम टेनिस, बट ही इज अ वेरी ऑनेस्ट प्लेयर। मतलब जैसे उससे पूछा गया कि was there any misfortune, it takes guts to accept कि now I am aging, my body is not right there। बहुत सारे कोई भी स्पोर्ट्स स्टार्स नहीं कर पाते हैं, like they just keep going, saying that I'll come back. But the acceptance is the biggest thing that he accepted. Ki at 38, he's not the same player, so he has to work harder to uh, beat like Sinner or Alcaraz, which is like 16 years younger to him. And this is the trait of an elite athlete, right? उससे बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेमीफाइनल के बाद कि यार, आप मैच में डिड यू थिंक यू वर फिजिकली कॉम्प्रोमाइज? एंड Yeah. कोई और एथलीट होता ना, वो थोड़ा ऑफेंड हो जाता कि यार मेरे एज के बारे में बात कर रहे हो,
whatever, right? But he was so honest. He said, right, and this is what he said. He This is my age, मेरी body वो हो गई है, wear and tear है. And he also, if you also compare him with someone like Cristiano Ronaldo, Yeah. who also said the same thing at age of 40 right now, that him playing with youngsters who are trying to beat the shit out of him, it's very hard to perform at that elite level at this age. So kudos to these guys, and that their answer, their thought process, their mentality shows why they are at the top of their game still at this age. Yeah. एंड आई थिंक एक चीज जो होती है क्वालिटी लेजेंड्स में, दैट इज द लॉन्जिविटी। मतलब बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं जो 1 साल 3 साल 5 साल खेलते हैं। इट लुक्स लाइक कि शायद जैसे हम देखते हैं क्रिकेट में बात करते हैं कि कोई बंदा आता है और लाइक 50 का एवरेज, मे बी शायद सचिन से ज्यादा एवरेज हो उसका, लेकिन just playing the same way for 20 years is what legends are made of, right? The same with like these three. कोई भी लाइक हमने देखा कि एंडी मरे जीतता था पहले, बहुत लोग बीच में आए जिन्होंने जीता, लेकिन लगातार वो 18 साल तक लगातार क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल खेलना, दैट इज लॉन्जेविटी। मुझे लगता है दैट्स व्हाट Yes. लेजेंड्स आर मेड ऑफ, एंड जो तीनों ने कितना करके बू किया दिखाया गया है। उसको। आप देखो, आप कितने टाइम, कितने लोगों ने, कितने क्राउड ने, फेडरर फैन ग्रुप, नडाल, नॉट इवन दूस, लाइक दे वर लाइक Djokovic haters apparently. I don't know what those guys are up to, but मैन, ऐसा ऐसा टैलेंट ना नहीं आता है। आपको बता दूं, मैं 20 से ऊपर ग्रैंड स्लैम, एक ग्रैंड स्लैम जीतना कितना टफ होता है, आप 20 की बात कर रहे हो। आई मीन, I'm just in awe of Djokovic. And the way he trained, मतलब if you look at his personal life, यूगोस्लाविया में born, like he did not have the right infrastructure, वहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, he did not have the best of facilities, और वहाँ से आके खेलना, और अपने अर्ली करियर में ही वॉज स्टिल अंडर द शेडोज ऑफ फेडरर एंड नडाल, राइट? लाइक वो जीत भी रहा था बीच बीच में, लेकिन लाइक पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देम। उस शेडो से निकल के अपनी फैन फॉलोइंग बनाना, अपना अपना करियर बनाना, आई थिंक is the biggest thing. And again, like as I say, like legends, like they retire, but like whatever time you have, 1 2 साल 3 साल जो भी Djokovic can just enjoy that tennis. I think that's what you get from him now. Maybe not Yeah, anything yeah, else. absolute privilege to watch him play tennis. Yeah. Not just at this age. I mean, I mean, just cherish the years, the time we have. I hope he plays US Open, which starts next month. But I'm just cherishing the moment he's playing. So Yeah, yeah, yeah. I think let's just praise him for his past records, and wish him well for the future. But yeah, I think it was a great tournament. We'll come back for again like Australian Open, and talk about that as well. yeah, definitely 1 month to go, and then we'll see how these athletes, these top three people, perform in New York next Yeah. month.